So this exercise which we are doing, seek first to understand, then to be understood. Oh Hmm. my God. Did you really try once for once? No, I didn't try it. Yeah. If you try, you will be blown. कुछ नहीं, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में कुछ बोल रहा है, आप सिर्फ ये क्रिएट करो, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट. अपना फ्लो करेगा. गौरव जी, कोई भी आपसे बात करे ना, Yeah. उसको उस वक्त लेके बैठ जाना कि आज मुझे ये प्रैक्टिस करना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड. हाँ. तो आपके जो जजमेंट्स आते हैं ना उस इंसान के लिए, Hmm. उसके बियॉन्ड आपको उसको सुन पाओगे. Hmm. और उसके बियॉन्ड जब सुनोगे ना, मैजिक होगा लाइफ में. Hmm. सो आज सुबह मैं कैफे गई थी आउट ऑफ ऑफिस के लिए. Hmm. वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड आती है, मैं बुद्धिस्ट चैंटिंग करती हूँ ना, म्यो रिंगे क्यों. तो Hmm. वो भी आती है. तो मेरा एक परसेप्शन था कि पता नहीं क्या करती रहती है, हमेशा मतलब मेरे को ज्ञान देती रहती है कि ये करो वो करो, मुझे नहीं करनी ना म्यो रिंगे क्यों की रीडिंग. मैं ऑलरेडी बुक रीडिंग कर रही हूँ, कितनी Hmm. बुक रीडिंग करूँ Hmm. ना. सो आई ऑलवेज वांट टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट दैट टू हर. पर Hmm. आज मैं गई, उसके पास बैठी, उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी. मुझे लगा शिट यार, अब वापस शुरू हो गई. मैंने बोला यार लेट मी लिसन टू हर, मे बी. तो मैंने बोला आई वांट टू लिसन टू हर, आई वांट टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू हर. तो मैं वहाँ Hmm. पे बैठ गई. Hmm. शुरू में जोर आया, फिर मैंने उसको सुनने की कोशिश. मैंने उसको आज 3-4 घंटे सुना है गौरव जी, सुबह सुबह. Hmm. और उसके बाद उसने मुझे ऐसी ब्यूटीफुल चीज दी जहाँ पे मैं स्टक हो रही थी अपनी लाइफ में. Hmm. उसने उसको खींच के गायब कर दिया मेरी लाइफ से. एंड आई गॉट Hmm. क्लैरिटी इन माई लाइफ. Hmm. शी गेव मी क्लैरिटी इन माई लाइफ. So magic happens when you actually just want Hmm. to listen empathically Hmm. without, your perception and judgment. Hmm. मतलब मैजिक क्रिएट होगा. आपके Hmm. ऑफिस में भी तो अभी अपन बुक रीडिंग करेंगे ना, तो मैं तो अभी अपने स्टाफ को भी, मेरे को क्या जोर आता है स्टाफ को सुनने में कि क्या बकवास Hmm. करेंगे, तो मत ही बोलो. मैं नहीं सुन Hmm. सकती. मेरा हमेशा से हर चीज में है मेरा, मैं नहीं सुन सकती, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, मैं नहीं सुन सकती. आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन, दैट्स अ प्रॉब्लम. आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन. अब मैं Hmm. उस चीज को कैच कर रही हूँ. जैसे ही मेरे अंदर आता है ना, मेरे को नहीं सुनना यार, मुझे नहीं सुनना, मुझे मत बोलो. ऑफ कोर्स मुंह पे नहीं बोलती, पर अंदर से आता है. बोलती अब तो सुनूंगी मैं. लेट मी प्रैक्टिस. फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड. जनरली मुझे लगता है मुझे पता है क्या बकवास कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सब फालतू बातें. माई वे ऑफ लिसनिंग. तो मैं सामने वाले को सुनती नहीं हूँ, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं देती हूँ. और फिर मुझे लगता है सामने वाला मुझे नहीं समझता. मे बी आई डोंट लिसन टू देम, आई डोंट अंडरस्टैंड देम. और ये Hmm. ह्यूमन बीइंग के साथ है. Hmm. लेट्स सी. Hmm. आपको म्यूट करना पड़ेगा, आई थिंक बहुत शोर आ रहा है. हाँ, मैं म्यूट कर लेता हूँ. When people are really hurting and you really listen with a pure desire to understand, with pure desire to understand, you will be amazed how fast they will open up. They want to open up. Children desperately want to open up, even more to their parents than to their peers. And they will, if they feel their parents will love them unconditionally and will be faithful to them afterwards and not judge or ridicule them. If you really seek to understand without hypocrisy, without guile, there will be times when you will be literally stunned with the pure knowledge and understanding that will flow to you from another human being. जो मेरे साथ आज सुबह हुआ. It isn't even always necessary to talk in order to empathize. In fact, sometimes words may just get in your way. That's one very important reason why technique alone will not work. That kind of understanding transcends technique. Isolated technique only gets in the way. जनरली नहीं है कि आप एम्पैथाइज करने के लिए सुनो, आपको बस. आई हैव गॉन थ्रू द स्किल ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग बिकॉज स्किल इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हैबिट. बट अंडरस्टैंड, we need to have skills, but let me reiterate that skills will not be effective unless they come from sincere desire to understand.
सो एम्पैथिक लिसनिंग का जो कोर है, जो बेस है, वो है सिंसियर डिजायर टू अंडरस्टैंड, मेरी सिंसियर डिजायर टू लिसन, sincere desire to give respect to the other person, sincere desire to give that respect that I will give him or her time to listen. People resent any attempt to manipulate them. In fact, if you're dealing with people you are close to, it's helpful to tell them what you're doing. I read this book about listening and empathy, and I thought about my relationship with you. I realized I haven't listened to you like I should. मैंने आज उसको बोला, but I want to. It's hard for me to listen to you. I may blow it at times, but I'm going to work at it. I really care about you and I want to understand. I hope you will help me. Affirming your motive is a huge deposit. Affirming your motive is a huge deposit. So, आपका motive क्या है? I want to understand the other person. I want to listen. But if you're not sincere, I wouldn't even try it. It may create an openness and vulnerability that will later harm when a person discovers that you really didn't care, you really didn't want it to listen, and he's left open and exposed and hurt. The technique, the tip of the iceberg, has to come out of the massive base of character underneath. And now there are people who protest that empathic listening takes too much time. It may take a little more time initially, but it saves so much time downstream. Of course, मैंने आज 3-4 घंटा उसको सुना, पर उसको 3-4 घंटा सुनने के बाद मुझे लगा कि यार आज मुझे एक नई फ्रेंड मिल गई. Literally, she is caring for me. I said कि यार सुबह से ही बात शुरू हुई है, राइट? अभी शाम को 5-6 बजे मैंने बोला ऐसा लग रहा है I'm in a relationship with you and you are my boyfriend. तो उसने बोला मैं बॉयफ्रेंड तो नहीं, गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, like you know whatever, but she's caring so much because I gave her the listening which I was stopping her to give to me before. The most efficient thing you can do if you are a doctor and you want to prescribe wise treatment is to make accurate diagnosis. You can't say I'm too much hurry, I don't have time to make diagnosis, just take this treatment. जनरली अपन क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे को टाइम नहीं है, मैं समझ गई तेरी प्रॉब्लम, ये रहा ट्रीटमेंट. अपन सुनने का, टाइम देने की एफर्ट नहीं डालते. आई रिमेम्बर राइटिंग वन टाइम इन अ रूम ऑफ हवाई, वहां पे हवा चल रही थी, तो मैं ना एक एक पेपर, मेरे को इरिटेशन हुआ, मैंने एक एक पेपर को पकड़ना शुरू कर दिया. फाइनली आई रियलाइज इट वुड बी बेटर टू टेक 10 seconds एंड क्लोज वन ऑफ द विंडोज. So in the same way, empathic listening takes time, but it doesn't take anywhere near as much time as it takes back up and correct misunderstanding when you're already mile down the road. To redo, to relive with the unexpressed, unresolved problems, to deal with the results of not giving people psychological air. A discerning empathic listening can read what's happening down deep fast and can show such acceptance, such understanding that the other people feel safe to open up layer after layer until they get to soft inner core where the problem really lies. अब मैंने जब उसको listening दी 2-3 घंटे की, चौथा घंटा जब मैंने बोलना शुरू किया ना गौरव जी, मुझे समझ में भी नहीं आया, मैंने ऐसी ऐसी चीजें बोली जो मैं खुद भी प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको इमोशनल लिसनिंग दी, उस बंदी ने मेरे को इमोशनल लिसनिंग दी, और उसकी लिसनिंग इतनी प्योर और प्रिस्टीन थी कि मैंने खुद के इमोशंस को मैं देख पाई. मैं खुद को पहली बार नॉन जजमेंटली खुद को सुन पाई, क्योंकि आप जब दूसरों को जज करते हो तो आप खुद की बातों को भी जज कर रहे हो, तो आप खुद ही खुद से बात नहीं कर पाते. So when you are giving empathic listening to the another person, उसमें आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे एज अ ह्यूमन बीइंग. ट्रांसफॉर्म. People want to be understood, and whatever investment of time it takes to do that will bring much greater returns of time as you work from an accurate understanding of the problems and issue from a higher emotional bank account that results when a person feels deeply understood. मतलब this is a crazy exercise. अभी तक की मेरे को best लग रही exercise है. Better than other habits we have read. Maybe because this is something which I have never practiced. I never understood it before in life. Understanding and perception. As you learn to listen deeply to other person,
you will discover tremendous differences in perception. You will always begin to appreciate the impact of these differences can have as people try to work together in interdependent situations. You see the young human, I see the old lady, and both of us are right. You may look at the world through spouse centered glasses. I see it through money centered lens of economic concern. You may be scripted in abundance mentality. I can be scripted in scarcity mentality. You may approach problem from highly visual, intuitive, holistic right brain paradigm. I may be very left brain, very sequential, analytical, and verbal in my approach. Any Our perceptions can be vastly different, and yet we both have lived with our paradigms for years, thinking these are facts and questioning the character and mental competence of anyone who can't see the facts. अब मैंने अपनी रिलेशनशिप के बारे में पहले भी शेयर किया हुआ है कि मीत एंड माई, मैं पहली बार समझ पा रही हूँ कि आई एम अ वेरी इमोशनल ह्यूमन बीइंग. मैं तो बातें ही इमोशंस में करती हूँ, एंड माई हस्बैंड इज वेरी प्रैक्टिकल. He only talks in logics. So when I'm saying I'm not feeling, I'm feeling disoriented, उसको लगता है क्या बकवास कर रही है ये. डिसोरिएंटेड फील कर रही है मतलब क्या, काम पे ध्यान दो. उसकी लॉजिक में घुसता ही नहीं है वो चीज. एंड मुझे लगता है यार ये कितना इनसेंसिटिव बंदा है, ये बोल रहा है काम पे ध्यान दो, उसको मेरी इमोशंस की कदर ही नहीं है, बिकॉज ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम लेफ्ट ब्रेन. ना मैं उसको अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ, ना वो मुझे अंडरस्टैंडिंग दे रहा है. जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रही, जब हम एम्पैथिकली एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगी, ये तो इंसेंसिटिव है. वो क्या बोलेगी, ये तो ओवर ड्रामेटिक है, जब देखो जब रोती रहती है. We are not able to enter in each other's world. And now, if I want to improve my relationship, it's my responsibility that I give him understanding first, that I give him space to be as he is, that I try to understand his perspective. Then, अरे वो मुझे समझ नहीं रहा, अरे वो मुझे समझ नहीं रहा, अरे वो मुझे समझ नहीं रहा. Now, with all our differences, we are trying to work together in a marriage, in a job, in a community service project to manage resources and accomplish results. So, how do we do it? How do we transcend the limits of individual perception so that we can deeply communicate, so that we can cooperatively deal with the issues and come up with win win solutions? The answer is habit 5. It's the first step in the process of win win. Even if and especially when the other person is not coming from that paradigm, seek first to understand. It's your responsibility to seek first to understand. ये बुक कौन पढ़ रहा है, रिचा और गौरव. और अगर रिचा और गौरव पढ़ रहे हैं तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड. एंड गौरव जी, आई नो यू आर माई वेरी सिंसियर स्टूडेंट, नॉट माइंड. मतलब इस बुक का वी बोथ आर, पर इसको प्रैक्टिस में उतारो. जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस अपने दिमाग में रखना है कि मेरे को ये प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट. कब लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई स्टाफ आपसे बात करने आ रहा है, आपका बच्चा आपसे बात करने आ रहा है, आपकी बीवी आपसे बात करने, सिर्फ दिमाग में रखना, यार आई वांट टू लिसन, आई वांट टू लिसन हर न्यूली, जिस तरह से मैंने कभी सुना ही नहीं. लेके बैठ जाओ, सुनने बैठ जाओ. जब ये प्रैक्टिस में आएगा ना, ये करोगे नहीं तो फिर ये खत्म है, बुक पढ़ के पूरी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है इसका. This principle worked powerfully for one executive who shared with me the following experience. I was working with a small company that was in the process of negotiating a contract with large national banking institute. The company I worked with had decided to go for win-win or no deal. They wanted to significantly increase the level of service and the cost, but they have been almost overwhelmed with the demands of large financial institutions. The president of the company sat across the negotiating table and told me, we would like for you to write the contract the way you want it so that we can make sure we understand your needs and your concerns. We will respond to those needs and concerns. Then we will talk about the pricing. The members of negotiating team were overwhelmed. They were astounded that they were going to have the opportunity to write the contract. They took 3 days to come up with the deal. When they presented it, the president said, now let's make sure we understand what you want. उनने कॉन्ट्रैक्ट तो बनवाया, उनसे डिमांड भी पूछी, पर फिर उसको रीफ्रेज भी किया. Then he went down the content, rephrasing the content, reflecting the feelings until he was sure and they were sure that he understood what was important to them. Yeah, that's right. No, that's
That's not exactly what we meant here. Yes, you have got it now. When he thoroughly understood his perspective, he proceeded to explain some concerns from his perspective, and they listened. They were ready to listen. They weren't fighting for air. What had started out as very normal, low trust, almost hostile atmosphere had turned into fertile environment for synergy. As the conclusion of the discussions, the members of the negotiating team basically said, "We want to work with you. We want to do this deal. Just let us know what the pricing is and we will sign." ह्यूमन बींग्स की बहुत बड़ी डिमांड होती है टू अंडरस्टैंड, उसके लिए वो हायर प्राइस भी दे सकते हैं. देन सीक टू बी अंडरस्टूड. Seek first to understand, then to be understood. Knowing how to be understood is the other half of the habit 5 and is equally critical in reaching win-win solutions. Earlier, we defined maturity as the balance between courage and consideration. Seeking to understand takes courage. No, sorry. Seeking to be understood takes courage. Win-win requires high side of both, consideration and courage. So it becomes important in interdependent situations for us to be understood. Ethos, pathos, and logos. Ethos is your personal credibility, the faith people have in your integrity and competency. It's the trust that you inspire, the emotional bank account. Pathos is the empathic side. It's the feeling. It's the meaning that you are in alignment with the emotional thirst of another person's communication. Logos is the logic, the reasoning part of the presentation. Notice the sequence: ethos, pathos, and logos. Your character and your relationship, and then the logic of the presentation. Your character, your relationship, and then the logic of the presentation. This represents the major paradigm shift. Most people in the making presentation go straight to the logos, which is the logic. यार ये situation में ये करना है. They try to convince other people of the validity of the logic without first taking ethos and pathos into the consideration. Ethos is the personal credibility, pathos is the emotional alignment. तो पहले आपको खुद को अलाइन करना है कि मैं ऐसा हूं. वो कैसे होगी पर्सनल क्रेडिबिलिटी? when we listen empathically. वो जब करते हैं तो एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है. फिर इमोशनल अलाइनमेंट कि ओके आई एम्पैथाइज विद यू, आई अंडरस्टैंड यू कमिंग फ्रॉम. देन by rephrasing, by telling them, okay, is this what you is by what you are saying, I can understand this. Have I understood it rightly? Then आता है अच्छा मेरे को ये लगता है ऐसे होना चाहिए. तो ये 3 steps है: personal credibility, emotional alignment, and then logical reasoning. I had an acquaintance who was very frustrated because his boss was logged into what he felt was unproductive leadership style. Why doesn't he do anything? I talked to him about it. He does nothing. How do you define effective? Who do they send back to school where the salesman doesn't sell buyer? Effective means it works. It means P and PC. Did you create change you wanted? I told you he didn't do anything. He wouldn't listen. तो फिर इसने बोला कि अच्छा वो तो नहीं सुन रहा, तो तेरे को चलेगा क्या? देन मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. तो फिर वो बोलता है मैं क्यों करूं प्रेजेंटेशन अच्छी बनाऊं? तो बोलते हो कि फिर ठीक है सर्वाइव कर ले अपने बेस्ट बॉस से. उसने बोला नहीं वो तो मैं नहीं कर सकता. तुमने सर्वाइव नहीं कर सकता, यू कांट लिव विद इट एंड इट कॉम्प्रोमाइजेस योर इंटेग्रिटी, देन ओके, get on the work, make an effective presentation because that's in your circle of influence. वो तुम्हारे हाथ में है. In the end, he wouldn't do it. The investment seemed too great. Another acquaintance, university professor, was willing to pay the price. He approached me, Stephen, I can't get to the first base in getting the funding I need for the research. बोल रहा कि मेरी रिसर्च इतनी पॉपुलर नहीं है, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड. तो फिर उसने बताया शो दैट यू अंडरस्टैंड द नीड देम इन डेप्थ. जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो नीड है उनसे ज्यादा अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करो. सामने वाले को बताओ कि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें ज्यादा अच्छे समझता हूँ. जितना तुम खुद को नहीं समझते उससे ज्यादा मैं आपके कंसर्न्स को समझता हूँ. देन केयरफुली एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड योर रिक्वेस्ट. Do you want to practice it with me? Then this अगर आप presentation कर रहे हो तो it needs rehearsal also.
Now, let me see if I first understand what your objectives are and what your concerns are about this presentation and my recommendation. ये इसने इस तरह से presentation start की. He took time to do it slowly and gradually. In the middle of his presentation, demonstration, his depth of understanding, respect for their point of view, the investor said, "You have got the money." क्यों? क्योंकि the investor को feel हुआ कि यार ये बंदा समझता है, respect करता है मेरे point of view को. When you can present your own ideas clearly, specifically, visually, and most important, contextually, in the context of deep understanding of other people's paradigms and concerns, you significantly increase the credibility of your ideas. You're not wrapped up in your own thing. You really understand what you are presenting, maybe even be different from what you had originally thought, because in your effort to understand, you learned. जब मैं उस बंदी के पास बैठी थी आज सुबह, मेरे को लगा 5 मिनट में उठ जाऊंगी. तो जब मैंने एक्चुअली में उसको सुनना शुरू किया, मुझे और सुनने का मन हुआ, मुझे और सुनने का मन हुआ. एंड आई गॉट यार शिट, दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड. मैं और सुनी और उसके सुनने में मेरे में अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेरे में कुछ खुल गया, मेरा परसेप्शन चेंज हो गया देखने का. Habit 5 lifts you to greater accuracy, greater integrity in your presentation. And people know that. They know you're presenting the ideas that you genuinely believe, taking all facts and perceptions into consideration, which will benefit everyone. Habit 5 is powerful because it is in the middle of your circle of influence. Many factors and interdependent situations are in the circle of concern, problems, disagreements, circumstances, other people behavior. ये सब concern वाले circle में आता है, right? ये आपका concern है पर आप कुछ कर नहीं सकते उसमें. But if you focus your energies out there, you deplete with little positive results. आप problems पे focus करोगे, अगर अगले लोगों के behavior पे focus करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. But अगर आप उनकी प्रॉब्लम, उनका कंसर्न सुनने की कोशिश करोगे, बट यू कैन ऑलवेज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, दैट्स समथिंग विद इन योर कंट्रोल. एंड इफ यू डू दैट, योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, योर डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल will create magic. Emotional bank accounts, you will build emotional bank account and you will give people psychological air they need so you can work together effectively. It's an inside out approach, and as you do it, what watch what happens to your circle of influence. Because you really listen, you become influenceable, and being influenceable is the key to influence others. अपन सोचते हैं मुझे सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है, पर सामने वाले को इन्फ्लुएंस आप जब कर पाओगे जब आप खुद इन्फ्लुएंसेबल होगे. Your circle begins to expand. You increase your ability to influence many of the things in your circle of concern. Watch what happens to you. The more deeply you understand other people, the more you will appreciate them and the more reverent you will feel about them. To touch the soul of another human being is to walk on the holy ground. Habit 5 is something you can practice now. The next time you communicate with anyone, you can put aside your own autobiography and genuinely seek to understand. Even when people don't want to open up about their problems, you can be empathic. You can sense their hearts. You can sense their hurt. You can respond. You seem down today. They may say nothing. That's all right. You have shown understanding and respect. Don't push. Be patient, be respectful. People don't have to open up verbally before you can empathize. You can empathize all the time with their behavior. You can be discerning, sensitive, and aware, and you can live outside your autobiography when that is needed.
And if you're highly proactive, you can create opportunity to do the preventive work, which is to spend time before, build a relationship, listen to them, understand them. Look at your home, at your school life. Build emotional bank account, give them air. Go out with your spouse on regular basis. Have dinner that you both enjoy. Listen to each other. Seek to understand. See life through each other's eyes. As well as seeking to understand each other, we often take time to actually practice empathic listening skills to help us in communicating with our children. रोल प्ले करो, सामने वाले के शूज में जाके देखो. The time you invest to deeply understand the people you love brings tremendous dividends in open communication. Many of our problems that plague families and marriages simply don't have time to fester and develop. अगर आप पहले से इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे टू अंडरस्टैंड थिंग्स, जो प्रॉब्लम आने वाली होती है वो आने से पहले गायब हो जाती है. The communication becomes so open that the potential problems can be nipped in the bud. And there is a greater reserves of trust in the emotional bank account to handle any problem that come to arise. In business, you can set up one-on-one time with other employees, listen to them, understand them. मैंने तो ये लिया है, मैं तो अब वो जो राहुल सर ने ईएम और ओएम करने के लिए बोला है ना, मैं बहुत रेजिस्ट कर रही थी कि कौन सुनेगा 30 जनों को. अब मुझे लग रहा है मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, तो मैं एक को बुलाऊंगी और बैठ के सिर्फ सुनूंगी. Listen to them, understand them. Set up human resource accounting or stakeholder information system in your business to get honest, accurate feedback at every level, from customers, from suppliers, and from employees. Make the human element as important as the financial or technical element. You save tremendous amounts of time, energy, money when you tap into the human resources of the business at every level. When you listen, you learn. And you also give people who work for you the psychological air. You inspire loyalty, and ये आपकी झंडे rocket लगा देगा life में. Seek first to understand before the problems come up, before you try to evaluate and prescribe, before you try to present your ideas. Seek to understand. It's powerful habit of effective interdependence. When we really deeply understand each other, we open the door to creative solutions and third alternatives. Our differences are no longer stumbling blocks to communicate and progress. Instead, they become the stepping stones to inner synergy. Yay, we have completed the chapter. Half an hour में गौरव जी. अब आप practice करना क्योंकि इसमें time सारा समझने में लगेगा. हाँ. Select a relationship in which you sense the emotional bank account is in the red. Try to understand and write down the situation from other person's point of view. In the next interaction, listen for understanding, comparing what you are hearing with what you wrote down. How valid were your assumptions? Did you really understand that individual's perspective? Share the concept of empathy with someone close to you. Tell him or her you want to really work on really listening to others and ask for feedback in a week. How did you do? How did it make that person feel? The next time you have an opportunity to watch people communicate, cover your ears for a few minutes and just watch. What emotions are being communicated that may not come across in the words alone? ये समझ में आया third point? Next time you catch yourself inappropriately using one of the autobiographical responses, probing, evaluating, advising, or interpreting, try to turn the situation into a deep deposit of acknowledgement and apology. I'm sorry, I just realized I'm not really trying to understand. Could we start again? और ये बहुत नेचुरल है. लास्ट क्लास में गौरव जी आपने मुझे बोला था, याद है? I started judging or trying to evaluate and try to think अरे यार ये सही टॉपिक है या नहीं. मैंने समझने की भी नहीं कोशिश किया where are you coming from. Base your next presentation on empathy. Describe the other point of view as well as, or better,
then its proponents, then seek to have your point of view understood from their frame of reference. So just send me these 5 points on the group I will now, do that. so I can just read it once again and see it. Perfect. अपन ये बुक कंप्लीट कर लेंगे इस महीने, हाँ हाँ, पक्का कंप्लीट कर लेंगे. और प्रैक्टिस करो गौरव जी. Yes, okay. और आप चल, है ना गूगल भी कर सकते हो समरीज के लिए, हाँ रिवाइज ठीक है. रिवीजन. I'll do that, but you post this in the group. आई विल हाँ, डू दैट. okay. Thank एक you. एक बार अपन रिवीजन करें क्या, आज जिससे अपन 2 सेकंड आज लगी. ठीक है. ओके. सो अपन ने प्राइवेट विक्ट्री में शुरू किया था हैबिट नंबर 1, बी यस. प्रोएक्टिव. बी प्रोएक्टिव बी प्रोएक्टिव वाज टू वर्क इन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. जो अपने कंट्रोल में उसी पे फोकस करना है, नॉट ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न. बिगिन विद द एंड इन द माइंड. आपको क्या चाहिए उसको विजुअलाइज करना, अपने वैल्यूज और पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना, एंड टू ऑपरेट फ्रॉम दैट एंड नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल सर्कल ऑफ वो जो था ना, मनी और स्पाउस सेंटर्ड और डिफरेंट सेक्टर्स. Then put first thing first was to prioritize goals and weekly यस. scheduling. कि मतलब अपन ने बना लिया कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे इस वीक के गोल्स है, इसके लिए मैं ये स्टेप्स लूंगा और उसको स्केड्यूल कर लेना. सो इन हैबिट 3 वी लर्न इट इज नॉट अबाउट बीइंग बिजी, बट इट्स अबाउट बीइंग क्लियर कि मेरी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, मुझे क्या चाहिए. फिर हैबिट 4 था थिंक विन विन. थिंक विन विन वाज अबाउट, थिंक विन विन किसके बारे में था गौरव जी? थिंक विन विन था कि बोथ द पार्टीज should win in a deal or in a conversation or in a contract that we are doing. अगर हम किसी के पास कोई चीज के लिए जा रहे हैं, and if I say something where I am winning and the other person is not winning, so it will not work. It has to be a win-win for both, for विन both the विन और नो people. डील. हाँ, win-win or no deal. Yes. सपोर्ट सिस्टम, कैरेक्टर, रिलेशनशिप एग्रीमेंट. इसमें अपनी कोई हम अबंडेंस मेंटालिटी थी कि थर्ड सोल्यूशन निकल सकता है, डिजायर्ड रिजल्ट्स इन थर्ड सोल्यूशन. ठीक है. डेवलपिंग. एंड फिर फोर्थ था सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड. ये तो बहुत पावरफुल है. Yes. Yes. कि सामने वाले को रीफ्रेस करना, उसके इमोशन समझना, उसको पहले रीफ्रेस करना और अंडरस्टैंड करना, देन कम्युनिकेट. हाँ अच्छा, विन विन में अपने करेज और कंसिडरेशन सीखा था. कंसिडरेशन के सामने वाले को क्या चाहिए, और करेज कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख पाओ. Yes. यू डोंट हैव टू गो इन सेक्रीफाइस एंड यू डोंट हैव टू डू कि मैं जीत जाऊं, सामने वाले का नुकसान हो जाए. तो अपन विन विन वाज अबाउट हैविंग करेज एंड कंसिडरेशन बोथ हाईली. You have to communicate till the time you reach the point of agreement and mutually beneficial situation. इमोशनल बैंक अकाउंट भी क्रिएट करने का Emotional bank सीखा था. account भी था. यस, Yes. इमोशनल बैंक अकाउंट अपन ने इसमें सीखा था. बिल्डिंग ट्रस्ट. Yes. परफेक्ट. परफेक्ट. अब अपन हैबिट 6 सिनर्जाइज सीखेंगे एंड पार्ट 4 है रिन्यूअल. दोनों ही बहुत प्यारे चैप्टर है. Okay. अच्छा, कल है ना, आप कर रहे हो क्या वो राहुल वो वो अक्षर यादव की सुबह क्लास? 6 नहीं, मैं तो अक्षय यादव में हूँ नहीं ना. अच्छा, तो मेरी अक्षर यादव की क्लास होगी ठीक है. कल. तो ठीक है. संडे को करेंगे अपन हैबिट 6 नहीं, सिनर्जाइज. संडे तो वी आर इन दिल्ली. अच्छा, आप जा रहे हो क्या? हाँ, मंडे को भी नहीं हो पाएगा? मंडे भी नहीं होएगा. सो यू आर नॉट कमिंग टू दिल्ली? I'm coming to Delhi, पर I'm coming on Monday. संडे को ओके. मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ओके. मेरे इन-लॉज और सब लोग आ रहे हैं. ठीक है. ओके. तो ठीक है, अब तो अपन कवर कर लेंगे, मतलब ठीक है. हाँ हाँ, एक हफ्ता, एक हफ्ते में दोनों एक हो हफ्ते जाएंगे.